Hi everyone, Ashish Kyal here. Very warm welcome to Ashish Kyal Trading Gurukul. And I'm just checking with you all. This is Friday at 4, and if you are all able to see me, hear me out, और आपको मेरी आवाज आ रही है, आप देख पा रहे, सुन पा रहे, अगर देख पा रहे, सुन पा रहे, तो ensure that you are putting it on the chat. And or in case you are subscribed to the channel, then only you will be able to chat. So ये वेबिनार लाइव आज हम यूट्यूब पे कर रहे हैं. वी आर नॉट डूइंग इट ऑन द अदर प्लेटफॉर्म्स. आई एम जस्ट चेकिंग विद माय टीम इफ एवरीथिंग इज सेट एंड एवरीथिंग इज गुड टू गो. सो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू डूइंग टुडे? इट्स फैंटास्टिक. एंड साथ ही में एक और चीज मैं ये आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई आप लोगों की ट्रेडिंग कैसे चल रही है. एंड आर यू लुकिंग एट द साइकिल दैट वी आर लुकिंग? आर यू फॉलोइंग दैट और नॉट? एक सेकेंड रुकिए. ठीक है, तो मैं चेक कर रहा था कि भाई यूट्यूब पे कमेंट आ रहे कि नहीं. आई कैन सी वेरी वार्म वेलकम वरुण, नीरज, and so many of you, and also just a very quick thing that आज जो मूवमेंट था मार्केट का, बल्कि 2 दिन से अगर आप मार्केट का मूवमेंट देखेंगे तो गैप अप हो रहा है, साइडवेज हो रहा है, गैप अप हो रहा है, साइडवेज हो रहा है. अभी रुझान था नीचे का. द ओवरऑल मूवमेंट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग वाज डाउन, देन इट रिवर्स्ड बैक, एंड दिस इज क्लासिक वेव बी फॉर्मेशन is what I am seeing on the market. And are you able to see that movement on the market? And are you able to understand all of these things? इसके पहले let me ask you a simple question. What do you think is the direction? Is it up or is it down? मैं यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों के साथ में कि क्या मार्केट का जो रुझान आपको क्या लग रहा है? यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है? What do you think is going to be the direction? मैंने एक पोल यहाँ पर ले रहा हूँ. Is निफ्टी, मैं यहाँ पे एक पोल ले रहा हूँ, इज निफ्टी डायरेक्शन अप और डाउन फॉर कमिंग वीक? आई एम टेकिंग अ वेरी क्विक पोल एंड यहाँ पर स्टार्ट दी पोल. चलिए, मैंने एक पोल की शुरुआत की है. मैं देख रहा हूँ आप लोग पोल में पार्टिसिपेट करो, ऑल ऑफ यू. एंड पीपल हु आर नॉट एबल टू पार्टिसिपेट इन द पोल माइट हैव टू इंश्योर दैट यू आर फिलहाल नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल. तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तब आप पोल में पार्टिसिपेट कर पाओगे. तो क्या आप वोट कर पा रहे हो? बहुत कम जन ने वोट डाला है यहाँ पर. यार दोस्तों, वोट तो डालो तो पता तो चले कि व्यू क्या बन रहा है आप लोगों का. इज निफ्टी डायरेक्शन अप और डाउन फॉर द कमिंग वीक? वेरी गुड आफ्टरनून वेद, वरुण, देवाशीष, अमित, श्रीनिवास, ग्रेट टू सी यू. एंड यहाँ पर just a second, give me a second. यहाँ पर ओके, सो बहुत सारे जन अभी भी वोट करते रहिए. हम डिस्कशन शुरू करते हैं, डिस्कशन आगे लेके चलते हैं. और यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग वोटिंग चालू है, जहां अभी फिलहाल आप देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं कितने जन वोट कर रहे हैं, कितने जनों ने क्या वोट किया है. तो देखते हैं ना सब क्या बोल रहे हैं. यहाँ पर ज्यादातर लोग बाय साइड पे लग रहा है, which is looking at it. साथिया, great to see you also. आपके कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं ट्विटर पे. और आगे बढ़ते हैं. वोटिंग तो चालू रहेगी, मैं वो वोट को बाद में एंड करूंगा. देखते हैं जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे इस पूरे दौरान. इसमें did you also manage to see the time of 11:30 which I have shared across yesterday on Twitter? Did you manage to see that time of 11:30 जो मैंने शेयर किया था? That 11:30, 12, around that level, market can possibly reverse. And if you looked at it, give me a big heart. वहां पर चैट में एक हार्ट का ऑप्शन भी है, so that you can see that it worked so fantastically well. And एक लेवल मैंने कहा था 19,220 is a crucial level, और निफ्टी उसी मैग्नेट के पास में बार बार मूव हो रहा है. So दो चीजें हैं दोस्तों. एक तो टाइम के हिसाब से 11:30 बजे market reversed back on the upside on 2nd of November. That is the cycle, and it worked brilliantly. It was up by nearly 200 points on the upside from that level of 19,064. Secondly, 19,200 and 19,220 is a very important level as per price action area, and that is a very important crucial level as per price action area. And that level
is where Nifty has managed to close as of now, around that area. So we are in a wave B formation. So let me now go back on the chart and explain it to you कि यार ये wave B formation है क्या, मतलब Nifty Neo wave के हिसाब से where are we right now and what is this wave B formation, where do we see this is going to happen. ये मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ चार्ट. जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं मेरा चार्ट ओपन कर लेता हूँ. यहाँ पर फ्रॉम अ नियो वेव पर्सपेक्टिव, दिस इज प्योरली फ्रॉम the advanced technical analysis that I am doing is from that perspective. So if you're looking at this entire movement, let me share my chart very quickly in front of all of you. चलिए आगे बढ़ते हैं. यहाँ पर अगर आप ये चार्ट मेरा देख पा रहे हो, are you able to see the chart here, every one of you? I want you to tell me yes or no, because if you participate, I know you are understanding it. And if you are seeing this chart, तो पोल को मैं एंड करूंगा बहुत ही क्विकली, क्योंकि क्या होगा, नहीं तो आप लोग व्यू देखने के बाद में, चार्ट का व्यू देखने के बाद में आप बोलोगे कि ना अच्छा यहाँ पर बाइंग है सेलिंग है. नहीं, दैट विल बी अनबायस्ड. आई वांट एन अनबायस्ड व्यू. सो यहाँ पर मैंने पोल बहुत क्विकली एंड कर दिया. और एक और चीज है कि यहाँ पर जस्ट गिव मी अ सेकेंड. So 75% people are saying that the overall view in the chat, if you can see, are bullish, and 25% are expecting it to be bearish. वोट ज्यादा नहीं मिले, 52 वोट्स है, चलेगा. हम वापस से पोल लेंगे थोड़े समय के बाद में देखने के लिए क्या व्यू बन रहा है. So let me now again go back on my screen and let me share across what I am seeing on the chart here. If you can see, the simplest way of price action, if you want to see, is this level of Nifty. If you are looking at the level of Nifty right now, just a second, which is this 19,223. This is the area where prices have found multiple times support. Do you see this area? Multiple times support is where price have found. यही एरिया एक हर्डल बन गया था. We can see the reversal happening, and now we are just managing to cross this area on the upside. We are just managing to do that. तो यहाँ पर लग रहा है कि यार अगर हम इस एरिया को मैनेज कर रहे हैं क्रॉस करने के लिए, which means that this is where prices should protect. तो 19,180 का जो लेवल है नीचे में, वो मेरे लिए थोड़ा सा लीव देके इंपॉर्टेंट हो जाता है मंडे के लिए. 19,180 ऊपर का जो लेवल है, अगर निफ्टी ऊपर का जो लेवल यहाँ पर 19,280 का लेवल निकालता है, तो वी कैन देन मूव टुवर्ड्स द गेन लेवल ऑफ 19,391. ये बन गया मेरा ट्रेड सेटअप. 19,180 19,170 बहुत दूर नहीं है दोस्तों. This level is very near around. So what is my trade setup that I am currently looking at in the market and that I am trading is Nifty support is at 19,180. Move so support की बात करें या Nifty Neo wave की बात करते हैं. Neo from a Nifty Neo wave perspective and price action. The level of 19,180 is very important. Okay, अगर from Neo wave perspective if I am talking, and price action level 19,180 is very important, and because this is not the gap area. This is the area where prices found hurdle multiple times. Okay, do you agree with me on that? Every one of you, do you agree with me? So what is next from here? ओके एंड साथ ही में एक और चीज दोस्तों कि इस लेवल पे अगर हम सस्टेन करके फिलहाल सस्टेन करके क्लोज कर रहे, तो मेरे ख्याल से ऊपर का लेवल्स 19,391 का ओपन हो जाता है. बट इफ वी मैनेज टू अगेन मूव बिलो दैट 19,180, इफ वी फिल द गैप, then I think we might be again moving back on the downside.
फ्रॉम द वेव पर्सपेक्टिव, इफ आई जस्ट हैव टू से फ्रॉम द वेव पर्सपेक्टिव, अगर हम देखेंगे यहाँ पर वेव पर्सपेक्टिव से आई थिंक वी हैव कंप्लीटेड वेव। ये जो पूरा राइज था ये डबल फेलियर में था। दिस फॉल वाज वेरी इंटेंस and very sharp, which broke most of the supports. Okay, and we reversed back on the upside. There are two things that you have to now understand with respect to the war, with respect to what is happening around. There are two very important aspects that you should understand. What are those two important aspects? First of all, major top या low जो market बनाता है, after the everyone focuses too much on the war. People think that because of the war market should fall, लेकिन सोचेंगे तो war के बाद market ऊपर गया। That shows resilience. Secondly, everyone talked about US bond yields. मैंने कल ही एक चार्ट बताया था परसों। If you are following me on YouTube, you should do and go and check that US bond yield chart. Okay, let me ask you, all the participants here, can you give a big thumbs up for everyone who has seen that video published 2 days back that talked about the bond yield in Nifty ka chart? How many of you have mentioned it, and how many of you have seen that video? I want to ask you all, give me a big thumbs up if you have seen that video, and what did you learn from that video? आपने क्या सीखा वो चैट पे डालिए। अगर आप चैट पे पोस्ट नहीं कर पा रहे, because you need to subscribe to channel and then you can post it across. Is it clear? Okay, so I can see the thumbs up started going up. Uday is a mentee, of course, and he has given a big thumbs up. He has seen that video because that video clearly mentions that. Amit has mentioning it. Yes, Monique Thakkar is saying that he has seen the video. So आप लोग जिन्होंने वीडियो देखा है, विजय कुमार, फैंटास्टिक। आप लोग जिन्होंने वीडियो देखा है, मुझे ये बताइए आपको क्या लगता है वो चार्ट देखे। Not because what I'm saying. Chaitanya Shukla is here. He's a mentee as well. Glad to get you all people here. हमने ट्यूसडे को एक्सक्लूसिव मेंटरशिप सेशन भी किया था। चैतन्य, you were there, and many of you who didn't get it, हमने मेंटरशिप के गुरुकुल में टेलीग्राम में वो डाल दिया है। So okay, so okay, I can see a lot of you are giving the thumbs up. So let me ask you, Poonam, glad to see you also here. The first most important thing that you have to do is to tell me, what do you see on the chart? क्या लगा आपको निफ्टी का बॉन्ड यील्ड के साथ में रिलेशनशिप देख के? Can I say there is a much higher positive correlation between the US bond yields and Nifty? Now, where is the question of bond yield के कारण मार्केट गिरना चाहिए? बॉन्ड yield तो अभी भी ऊपर ही था, and still markets are up with gap up. What changed? Nothing changed. That's the problem, and that is the issue, and that is what people should understand very clearly. So, एक और चीज जो आप बहुत कम जन को पता है वो है क्रूड ऑयल रिलेशनशिप विथ मार्केट। अगर आप देखेंगे ना, majority of the time it is the positive crude oil with the market that has resulted into the up move, and that is what is very important. So what I want to tell you in a nutshell is focus on the chart never lies, and chart will tell you what to expect next. Okay, you need to focus on the chart. That is very important. Okay, so let's just move forward. Again, the overall movement is what we are seeing. We are glad to see all of you who have seen that video. नहीं देखा तो आप YouTube पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। So चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों. Let me go on the next chart now. This is what I'm seeing on the Nifty Neo Wave perspective. We are in wave C. Once we are in wave C, the first thing that you should do is plot the 0B trend line. This is point 0, this is point B, and we will plot the 0B trend line. Mentees, you need to help me out here. If you have any questions, just post it across. 0B trend line हो गया हमारा यहाँ पे. And once we have the 0B trend line here, we can say that the support for as per the 0B trend line comes around which level? So the support as per the 0B trend line comes around 19,100. So which means that my ultimate support level on the downside is going to be 19,100 level.
Just some time back, I was live on Business Today, in case you were seeing that. And 19,100 is my support level. If 19,100 remains intact, we can expect market to find again bounce back. If 19,100, which is the zero-bit trend line, gets broken in faster time, what is two-stage confirmation? The two-stage confirmation is if this level of 19,100 is broken faster, then we can expect markets to reverse down and start a bigger C wave. So right now, this was wave A, which was going on. We are currently in wave B, which is going on. Once this is complete, we might have wave C on the downside. Now, for getting a little more objective confirmation here, let me apply Ichimoku Cloud. Ichimoku Cloud एक indicator है. Let me just apply that. Okay. Are you able to see this cloud? Let me just zoom in. And let me clear up all the chat. Now, Ichimoku Cloud is a fantastic way of identifying reversals. It is one of the best tools. We have done that exclusively in Master of Cycles. Are there people from Master of Cycles program here? Are there people from the Master of Cycles program here? And I want to know over here. Okay, fantastic. पूरा इंग्लिश में नहीं है यार, हिंदी भी तो बोल ही रहा हूं मैं. So what I'm asking you all, are you using that Ichimoku Cloud setup, and are you using the time cycle setup that we have done? And we are going to anyways have the Q&A session also very soon, so do not worry about it. So if you are looking at the overall market movement, and if you are looking at the Ichimoku Cloud that I'm showing you right now, you can clearly see that as per this Ichimoku Cloud, there is a hurdle. What is the hurdle level? What is the hurdle level? That we can see it here. Okay, and कौन सा लेवल लग रहा है आज का हाई? कैन आई सी इट इज इट द क्लाउड हर्डल? तो कैन आई से दैट 19280 19290 अगर निफ्टी ब्रेक करेगा तो वहां से हम ऊपर जा सकते हैं. कैन आई से दैट 19280 19290 ब्रेक करने पे हम ऊपर जाएंगे. सो इट इज इंपॉर्टेंट वेरी क्लियरली. अभी 15 मिनट चार्ट पे जाके देखते हैं. 15 पे बुलिश है, आवरली पे रेजिस्टेंस पे है. ठीक है, तो 15 मिनट्स पे जाके देखते हैं इचिमोको क्लाउड क्या बता रहा है. बहुत ही सिंपल है. लेट मी गो बैक ऑन दी चार्ट एंड लेट मी गो ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. ओके, आई एम गोइंग टू हाइड एवरीथिंग अक्रॉस. एक काम करते हैं, यहाँ पर 75 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं. 75 minutes time frame anyone is using? There are few neo wave traders who uses 75 minutes time frame. तो 75 minutes time frame पे देखेंगे तो हमारा जो वेव पैटर्न है थोड़ा क्लियर हो जाता है, लेकिन उसके हिसाब से भी हमारा जो लेवल है वो यहीं पे. जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड आई वांट without cycle I want to apply Ichimoku on a simple chart. So let me go on the simple chart without anything, without time cycle, and let me apply on that time 15 minutes chart पे apply करता हूँ मैं Ichimoku Cloud. So if I am applying the Ichimoku Cloud indicator here right now, just a second. Overall, can I say prices have, how do you do the wave count? Can I say that prices have moved above the cloud, okay, which can be possibly point A, wave A. Price moved below the cloud, which can be possibly wave B. Price moving above the cloud, which is right now wave C, which is going on. Can I say that? Every one of you? Okay. Can I say that we are in wave C? So above the cloud, below the cloud, above the cloud, that's how you do the wave count. साथ ही में FIBO apply करते हैं. Okay. Along with this, let us apply Fibonacci also. So we are combining two tools together. दोस्तों, we are applying Fibonacci. We are साथ में applying neo wave counter. Okay. Gaurav Narwar is saying that earn decent money by following your levels. Thank you very much. Small word in front of your kind support. Thank you. Glad to know that यार जो levels मैं आप लोगों के साथ tweet कर रहा हूँ. My Twitter handle will be shared by my colleague if they have not done it already. And do follow me on the Twitter because I keep tweeting a lot of things. And
यहाँ पर जो फिबोनाची सपोर्ट है, रिट्रेसमेंट है, फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स we have a retracement which is coming towards this level. Overall, if I check here, overall, can I say this is the 38.2% retracement where we are as of now, and 61.8% retracement comes towards 19,460. This is also a very high volume profile area. वॉल्यूम प्रोफाइल का मतलब होता है वहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज वॉल्यूम्स पे हुई है. दैट इज व्हाट वी कैन सी हियर ऑन द वॉल्यूम प्रोफाइल एरिया एज पर द chart. That is what we are able to see on this chart over here. So this is the Fibo. So what I am trying to show you right now, I am trying to show you a Fibo retracement. So what are we seeing? We are seeing on a Nifty 15 minutes time frame. We are seeing the Fibonacci retracement. So Fibo retracement along with Ichimoku Cloud. So 15 minutes time frame is good for short-term traders, intraday traders. You can get a good signaling level also, and but this has to be combined with neo wave counts. Then you get some kind of a conviction. So मुझे अभी 2-3 चीजों का पता चला है यहाँ से क्या. So यहाँ से मुझे ये पता चला कि भाई फिबोनाची लेवल जो है उसका रेजिस्टेंस 19460 पे है. सपोर्ट जो मार्केट का है क्लाउड के हिसाब से 15 मिनट चार्ट पे, अगर मैं देखूं क्लाउड के हिसाब से मार्केट का जो सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है दैट इज समवेयर अराउंड द लेवल ऑफ 19,220 जहां पर हमने क्लोज किया है. और अगर निफ्टी 19,270-80 ब्रेक करता है तो हमारा टारगेट गेन, टारगेट 1, टारगेट 2 विल बी 19,463. So we can clearly see that what are the targets, what are we looking at. So our target 2 right now is 19,460. Our target 1 on Nifty as of now is 19,391. Our buy level can be 19,280. My hurdle on the downside that I am looking at as of now is 19,001. Hurdle is support 180, followed by a crucial support level of 19,100. So I have now multiple things that are written on the chart. Basis of these simple techniques that I am combining together to with all of you, and that is what I am sharing across with every single one of you. Is it interesting? समझ में आया? Is it clear, everyone? So it is very simple way in which you can apply it, in which you can see it, in which you can look at the markets and you can trade the market. Is it interesting, guys? What are we doing and how we are deriving the levels, basis of wave theory, basis of Fibo, basis of these techniques. And सबसे मजेदार वाली बात ये है कि भाई टाइम जो डिराइव किया था उसके हिसाब से 15 मिनट्स टाइम साइकिल पे बहुत ही बेहतरीन चल रहा है चार्ट. सो दैट्स माय व्यू फॉर निफ्टी. अगर निफ्टी 19,100 का लेवल ब्रेक कर देता है, सो यहाँ पर हमारा जो व्यू है वो शॉर्ट टर्म में बेरिश हो जाएगा. अगर निफ्टी 19,100 का लेवल इफ दैट इज टेकन आउट, देन हमारा व्यू शॉर्ट टर्म में वेव सी के लिए बेरिश हो जाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी कैन देन एक्सपेक्ट द मार्केट्स टू कम ऑन द डाउन साइड. तो दोस्तों ये पूरा व्यू था. आई एम ओपन फॉर क्वेश्चंस. यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस इन द Q&A दैट आई एम आस्किंग राइट नाउ. एंड साथ ही में एक और चीज है दोस्तों, कल 11 बजे Are you all ready to be with me at 11 AM tomorrow? लेकिन आपको ज्वाइन करना पड़ेगा यहाँ से आज से. इफ आई एम जस्ट शेयरिंग अक्रॉस द लिंक, ये लिंक मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ. एक लाइव वेबिनार है which is going to be, I call it as an eye-opening master class. It's a free master class that I am doing it for all of you. You have to register for this master class. And once you register, you will receive the link and my colleague will set up everything. So are you ready to be with me for this masterclass tomorrow at 11 AM? You need to be, this will happen on Zoom platform. So आपको Zoom पे join करना है at 11 AM. And once you join me on the Zoom platform, it's going to change everything.
तो ये मास्टर क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बैंक निफ्टी के बारे में भी, निफ्टी के बारे में, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। और साथ ही में हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है दोस्तों, विच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 29th of November, which is going to be amazing way in which you ever trade the market, ever see the market. I'll just show you. You can register for this mentorship program. It's going to be with me. You are going to be with me for more than 3 months. Lifetime of association is going to happen for this mentorship program. And I'm just going to share across. यहाँ पर मैं एक लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, which is going to be helping you to register for this mentorship program. If you are interested, you can do that. एक लिंक है यहाँ पर. Let me just share that very quickly with all of you. And here is the link which I have now shared across for the mentorship program. So you can go and register yourself. You will have an amazing way of learning with me for this mentorship program. And आप लोगों ने वेबिनार के लिए रजिस्टर कर ही लिया होगा, नहीं किया तो लिंक विल ऑल्सो बी गिवन टू यू ऑन दी डिस्क्रिप्शन. जस्ट अ सेकंड, मैं लिंक वापस से आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ यहाँ पर. एंड ये रही लिंक जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है. तो दोस्तों आज के लिए एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वुड लाइक टू नो, जस्ट आस्क मी. एंड इट इज बीन फैंटास्टिक टू बी हियर विथ ऑल ऑफ यू. आई लव टू टॉकिंग टू यू ऑल. एंड कल बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन टुमारो. लिंक मैंने शेयर की वेबिनार की. एंड इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू. चलो आज के लिए यही वाइंड डाउन करते हैं. एक और चीज, आई हैव स्टार्टेड विद द स्निपेट्स, शॉर्ट स्निपेट्स ऑफ मार्केट, जो लास्ट ये वीक में मैंने स्टार्ट किए. आई वांट टू नो अ फीडबैक. विल इट हेल्प यू टू ट्रेड वेल? If yes, I will continue with that because मेरा टाइम जाता है यार उसमें. But if you are learning and if you are, it's helping you with the key levels that I share across, then let me know. Put that in your comment, put that in the chat. If not, then I will avoid continuing with that. We'll then do only this Friday at 4 webinars. So just I'm asking you all. Okay, Uday is saying Nifty analysis is working well. Awesome. गोल्ड के बारे में कल बात करते हैं. अगर आपका व्यूज हो गोल्ड के ऊपर पूछ रहे हैं, आई टॉक डाउन टुमारो. वीकली ब्रेकडाउन हुआ है, उसका रीटेस्ट है. डिप्स बिकम्स मोर प्रोमिनेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वीकली ब्रेकडाउन है, इसके बारे में एक कैंडलस्टिक प्रोफाइल के बारे में मैं कल आपको बताऊंगा. कल मैं बात करूंगा. बहुत सारे क्वेश्चंस आज आ रहे हैं. सो आई विल बी डिस्कसिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स टुमारो. I'll be taking up questions, Rachit. I'll take up that question tomorrow. So do join me tomorrow at 11, and it will be on Zoom. As I said, you need to register on the link which is given. I'll again reshare the link with you all. Here is the link. You can register on the link which I'm sharing across. Awesome, guys. Thank you very much. And साथ में there are hearts. Just ensure and इस वीडियो को लाइक करना ना भूले. सब्सक्राइब करिए चैनल को, so that I know that you are all enjoying these Friday at 4 sessions. आज के लिए इतना ही. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इट. सी यू टुमारो एट 11 AM. इट्स द 4th of November. आई एम गोइंग टू चेंज द वे you ever see the market. Have a wonderful day. Ashish Kyal signing off.